Yeah, hi, Anamika. Good evening. My question is that I keep going through, mood swings. So it's like, I keep oscillating between different levels. How to deal? I mean, I mean, I won't be in a state of mind for, say, a fifth, on a continuous level. So if I wouldn't have reached that stage, it's like I keep falling back to the lower frequencies and then rising to the upper frequencies. This happens sometimes, and sometimes, which is happening more often these days, I'm more like emotionally numb, right? So I can notice that there are many good things that have happened in my life this year, but my total focus, it's like, not, even if something goes very wrong or something out of the blue, something really good happens to me, my reaction is just the same. I'm neither too happy nor too sad. I mean, just, I don't know. I'm in that kind of a state. So I just really want to know how to deal with that. Hmm. Hmm. Right. So you keep falling back. Any have you worked with us or done any kind of healing work till now? Not yet, ma'am, but on my own, like I with some other coach, I have done chakra healing and some mind this NLP course as well. Hasn't helped much. It's just the same. Like for 60 days, it went all well, and in Hmm. fact, I was the most active person in both the groups, and I was appreciated for that. But didn't help. And actually, I was going through a lot of health issues, which were actually related to the stress only. So yeah, Hmm. it was manifesting in physical illnesses. Thankfully, that has subsided now, and it could be that, with the healing, maybe the inner, rage and those hidden emotions were coming out, which were there in the subconscious, but I was not dealing with that. Could be that. But still, it's Hmm. not, the sadness is still there, and I still feel emotionally numb. There are a lot of good things that are happening around, and there are good people. Still, that past trauma, I keep thinking about it, and I'm not able to come out of it. I really want to go ahead because I have had a word with the karma as well, and I have attended many calls. So I really want to go ahead with the healing course, which has three some stages, Okay. right? When you are stuck somewhere. Yeah, yeah. Hmm. Hmm. So what you are talking about now, all of these things like having swinging from, the like feeling one emotion and then swinging to feeling another emotion and then feeling completely apathetic about things where you feel very numb as if your system has shut down, then feeling anxious and then you know being in that space. So extrapolating this thing, this starts impacting, first of all, like you mentioned, your physical health or the mental health as well. People develop eating disorders, start gaining weight, losing weight drastically. They have sleep issues. They have go through, sleep Yeah, too I much, have sleep sleep too less. issues. Yes, sleep. uh, Yeah, happening. and yeah, and there would be relationship challenges at times that you might not have, the kind of healthy relationships that you expect in life. The money could also suffer. Workplace work could also suffer, and interpersonal relationships at workplace could also suffer. And moreover, our lives can feel, disoriented and hila hua here. So all of these are very much interlinked to the insecure attachment styles as we talk about. So there are three different categories of insecure attachment styles that we have. And majority of what you're talking about appears to be more on the anxious preoccupied side to me, right? So Right. Right. uh, इस लेवल पे जाके थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, है ना? ये काम बहुत Right. ज्यादा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। हाँ, ये चलता रहेगा, ये लाइफ टाइम चीजें हैं, क्योंकि चीजें निकल निकल के आएंगी और भी चीजें। इनफैक्ट आई मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जैसे थोड़े दिन पहले ना, आई आई गॉट वेरी सैड, है ना? एंड द काइंड ऑफ सैडनेस आई एक्सपीरियंस्ड, और मैं इतना सैड ना ऐसे कभी हुई नहीं थी,
और मुझे इतना अच्छा लगा ना सैड होके, इतना अच्छा लगा, क्योंकि एट वन लेवल आई वाज सो अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट कि मैं सैड हो पाई, राइट? क्योंकि लाइफ में मैंने ना ये कहीं ना कहीं मान लिया था कि सैड नहीं होना है, ये नहीं होना है, लेकिन द थिंग इज दैट इट्स लाइफ। सो व्हेन यू गो स्टार्ट रीचिंग द हायर लेवल्स, आप में थोड़ा करेज आता है, विलिंगनेस, न्यूट्रलिटी तक भी जाते हो, तो उसके साथ साथ ना काफी ऑल ऑफ दीज इमोशंस स्टार्ट बिकमिंग मोर एक्सेप्टेबल टू यू। तो मुझे ना उस दिन बड़ा सैड सा फील हो रहा था, और मैंने डिसाइड किया ना मैं आज इस सैडनेस को एंजॉय करूंगी। तो मुझे ना जैसे रोना आ रहा था ना, मैं रो रही थी, मुझे लेटना था, मैं लेट रही थी। तो उससे मुझे एक चीज बहुत ही सामने सामने ऐसे नजर आ रही थी ना, कि एज इफ इट्स लाइक अ वेव दैट केम अप, expressed something to me. I enjoyed it, cherished it, felt it completely. And then it slowly went down, giving me the lessons that I needed to take at that point of time. ठीक है? तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ना, हमें ये लगता है कि हम हमारे इमोशंस खत्म होने लग जाएंगे या कुछ ऐसा है। हमारे इमोशंस खत्म नहीं होते हैं, बट हम ना ज्यादा एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं अपने इमोशंस के। तो इमोशंस ज्यादा फील होंगे, लेकिन वो अब आपको प्योर फॉर्म में फील होने लगेंगे, उसमें ना रायता नहीं मिला हुआ है। लेकिन जब हम लोअर स्टेजेस में होते हैं ना, जो रायते की तरह होता है, लाइक यूर सेइंग मूड स्विंग्स, ऐसा ही होता है, ऐसे ही। आई कैन से दैट वेरी कॉन्फिडेंटली बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ। तो होगा, आगे जाके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, चीजें भी आएंगी, ये भी होगा, लेकिन आप उसमें स्टक नहीं होगे। दैट्स द होल पॉइंट। बट अभी ऐसा होता है ना कि अभी हम स्टक, अगर हम लोअर इनसिक्योरिटीज में, इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में ऑपरेट जब कर रहे होते हैं, हम उसमें फंसने लग जाते हैं। हम उन इमोशंस को लर्न करने की जगह वो इमोशंस एक काइंड ऑफ नॉट्स हमारे अंदर क्रिएट कर देती है। तो इसमें थोड़ा सा रुक के, जो भी आज तक आपकी लाइफ में हुआ है उसका तो डेटा है ना आपके पास, वो तो फैक्ट बेस्ड है। तो इसी में रिवर्स इंजीनियरिंग करके, इसी को पूरा अच्छे से डाइसेक्ट करके, अभी एक वो रायते की तरह ना, एक एक मान लेते हैं एक बैग है, उसमें टूल बॉक्स की तरह सब मिक्स्ड है। तो आप ना उससे निकाल के पहले उसका एक सेक्शन बना लो, दूसरा सेक्शन बना लो, तीसरा, ऐसे मान लेते हैं 10 सेक्शंस बन गए। फिर इन सारे 10 सेक्शंस में ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल लेट्स सपोज सम ऑफ दीज बिलीव्स, माइंडसेट, ट्रॉमा, वुंडिंग हैपेंड फ्रॉम योर मदर्स साइड, कुछ आपने एक्यूमुलेट कर लिया। ठीक है? जैसे मान ले, आई डोंट नो अबाउट योर लाइफ, मान लेते हैं पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज है। ठीक है? कि आपको आपकी मदर ने बचपन से ये सिखाया है, लेट्स सपोज, कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, अच्छे से बात करते हैं, है ना? कोई घर आए तो 10 बार खाना देना, कोई घर आए तो बिल्कुल हंसते रहना, और कोई घर आए तो बिल्कुल ये अजीब अजीब सी चीजें जो हमको एज अ चाइल्ड सिखाई जाती हैं बचपन में। a lot of that is good, but a lot of it falls into people pleasing। अब ये देख देख के छोटे बच्चे की तरह हम सीख जाते हैं। तो वो आपने अपना एक सेक्शन बनाया जिसमें आपने ये डाल दिया, अच्छा मदर वुंड्स, उसमें ये चीजें मुझे आइडेंटिफाई हो रही हैं, बहुत बढ़िया, हो गया पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। ठीक है? दूसरे सेक्शन में आपने डाल दिया फादर वुंड्स, तीसरे सेक्शन में डाल दिया कोई टीचर्स हैं, चौथे सेक्शन में डाल दिया सिबलिंग्स हैं, पांचवें सेक्शन में डाल दिया ग्रैंड पेरेंट्स हैं, छठवें सेक्शन में वो जो होते हैं ना फूफा, चाचा, ताऊ, मामा, ऑल द काइंड ऑफ बुआ, ये डाल दिया। सो वी डिवाइड इट इनटू ऑल द डिफरेंट सेक्शंस, डाइसेक्टेड, डिसइंटीग्रेटेड, then go deeper and look at each of these sections, understand each of these sections nicely. Hmm? And then you understand, okay, this is what is there in my subconscious. Okay. Then you have a very clear image. Ki, let's suppose your subconscious is like a picture. What are the colors? What are the themes? What are the patterns which are imprinted over there? Now, because you have a clear picture of this, work on this thing directly at the level of subconscious. So there are plenty of ways through which you can, rewire your subconscious and blah and blah and blah. Plenty of ways available online. But what we believe, how we think, ki zarurat hi nahi hai. It's not required at all. Because as a person, you cannot give yourself an anesthesia and you can operate yourself, right?
There is a simpler way. You go to a doctor and you ask him, speak to my subconscious and like deal with this pattern, right? End it up. Because this is not a matter of ego, this is a matter of your life. It's your life which is at stake, right? So that is more important, that we make our lives better. So you go through that. That's what we recommend, that itna loche ki zarurat hi nahi hai. Directly बैठो, surrender to the process, trust the process, and listen to the instructions. Let your subconscious listen to the instructions. Maybe in one iteration it won't happen. Give it two, give it three. It may take a month for you. Fine. A month of this kind of work is way better than, like a decade long of, research and doing and learning and falana and himkana. Rather than that, focus on this work for a month, and then for the next 10 years, live your life better. Right? So that's just how we feel about this thing. So इतना भी कोई लंबा टाइम नहीं लगता है. टाइम लगता है, but इतना लंबा भी नहीं लगता है. आगे जाके प्रॉब्लम्स आएंगी. Solve new problems in life. That's what we feel. कि find new problems in life, solve new problems in life. क्योंकि growth and evolution is a major purpose of life. But what's the whole point to spend decades of your life solving the same problems over and over and over again and failing? And बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है ना, that we try so many things and we fail at so many things. None of these things work out, that we end up feeling disappointed, as if, ये ठीक ही नहीं होने वाला है कभी, right? So I've been in that space for very long, where I have masked and told myself कि अब ठीक हो रहा है, अब ठीक हो रहा है, अब ठीक हो रहा है. But it took me a lot of courage to accept कि ठीक नहीं हो रहा था. More clarity, guidance, right kind of guidance was required. So I've been there, done that. So I can confidently say कि, we try so many different things. No harm in trying this, right? So a leap of faith. Sure. Yeah. Thank you so much, Anyway, अनामिका. आप और कर्मा से बात करके ऐसे लगता है किसी अपने से बात कर रहे हो. आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई chanced upon this group, because you guys talk from your own experience, which I mean, even psychologists, even many people, so even coaches for that matter, you are doing it not for money. It comes forth very obviously. So thank you so much, and you are doing a great service. Thank you. Thanks so much. thank you. Thank you, Namita. Thank you so much.